of our researchers. Now this time, by welcoming our professor, Ms. Sanjana Dixit from Ramdas College. Now we request her to take over. Symmetry. Pasti berfungsi siap dibantu. नेटवर्क इशू होगा वाईफाई से तो लोगों इधर वाले तो कोई नहीं तोड़ेगा ना मैं ये लाइव वाले इनिशिएट करेंगे मेरे पास Now, as a chemist, you are responsible so that these goals will be fulfilled in future as for that traditional processes exist and these processes have a very much challenge. These are using hazardous solvents and also that process is very time taking. So our scientist, that is the green chemistry father, Paul Anastas, as told by Sir Paul Anastas, and John Water has developed green chemistry principle. These are 12 principles of green chemistry which we have to follow for acquiring these goals. All you know that before starting your processes, you have to discuss 3 times among yourself and you have to see MSDS data. As told by both the sir, you have to see MSDS data so that there will be no problem for the environment and also for human being. Now this session is about the energy, how we will use energy for doing the processes. So first is in the preparation of azomethane, we have to use mechanochemical energy. Now next our colleague will do that thing, that is preparation of magnetic nanoparticle. So we will tell you about the use of ultrasonic machines and also magnets and how you can prepare your nanoparticle in less time. Okay? And then we will also show you the microwave and how you can use microwave for doing the different chemical reactions and it will save time also.
the lab, you will do this synthesis of azomethene. I will discuss not all these things. These azomethanes are very, very important compounds, chemical compounds. You all know that these can be used for cleaners in textile, in pharmaceuticals, in cosmetics, and in sensors. And it is very, very, it has a very, very high medicinal properties. All you know that how to use that energy for the creation of azomethane. So you can do it by hand, by simply grinding or shear or by milling process. It is a very simple process. This is traditional process, that is previously how azomethane were prepared. In that process, I will not discuss in detail. In that process, reflux condensers are used. So it is very high time consuming. Also, we use solvent, that is ethanol, though it is not very harmful solvent, but we use ethanol as a mixing media. Then we have to cool it and purify again with ethanol. So, as a green chemist, we have to think that in this process, what are the inflammable things or hazardous things, or what are the things which we can avoid, as told in the morning. So, here, use of flammable and toxic solvent. नंबर 1, इथेनॉल आपने यूज किया, उसको मिक्स करने के लिए एज ए सॉल्वेंट, तो आपका क्या है, वो फ्लेमेबल है और इट इज लेस टॉक्सिक बिकॉज वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड देन यू कैन ऑल देखिए ग्रीन सॉल्वेंट की एक लिस्ट है, वो आप ग्रीन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे और उसकी हेडिंग itself ही ग्रीन सॉल्वेंट है. उसमें आप डिफरेंट स्टडीज करते हैं क्या है इस सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज क्या है. ओके, तो प्रॉपर्टीज पढ़ के ही आप पहचानोगे कि ये ग्रीन है या आपका फ्लेमेबल है. इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लेके आप देखेंगे. ओके, और ग्रीन केमिस्ट्री में आप इसको पढ़ेंगे व्हाट आर ग्रीन सॉल्वेंट्स. तो सबसे पहले बोलते हैं और फिर ये वाला इथेनॉल है एंड देन इथेनॉल आपके ये सारे. देखिए मैंने आपको बोला कि इसमें आपने रिफ्लक्स कंडेंसर यूज किया, ठीक है. इट इज ए हीटिंग प्रोसेस, उसका लेकिन लॉन्ग टाइम हुआ, आपकी एनर्जी वेस्ट हुई और आपको बार बार उसका देखना पड़ा कि वेदर कंपाउंड इज फॉर्म और नॉट. आपको टेस्ट करना पड़ता है. अब राउंड वाटर फ्लास्क से निकाल के उसकी पीएचसी आपको लेनी पड़ेगी, डिफरेंट स्टडीज करनी पड़ेगी, आपका टाइम इसमें लगेगा. तो देन आपका वेस्ट जनरेट हुआ, सेफ्टी रिस्क हुए, हजार हुए, एक्सपोजर हुआ, आपको एक लैब में एक्सपोजर हुआ. ओके, सो with all these things you can think for a sustainable synthesis. जो कि ये सेशन है सस्टेनेबल तरीके से हमें प्रोसेस करने का. तो जितना भी मैंने अभी आपको बताया उससे आप एक सिंपल सस्टेनेबल की परिभाषा क्या दे सकते हैं. And less harmful for the nature. Okay. It means कि हमें रिसोर्सेस को बचाना है इन्वायरमेंट के लिए और आप प्लैनेट के लिए और आपके लिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए, कि अभी तो आप यूज कर सकें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आप बचा सकते हैं. ओके,
This is the simple definition of sustainability. आपको उसमें क्या होगा, इन्वायरमेंटल देखना पड़ेगा, चैलेंज आएंगे, इकोनॉमिक आपको आएंगे चैलेंजेस, और सारे चैलेंज आएंगे, उसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. एज अ केमिस्ट यू हैव द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी. इसमें इस प्रोसीजर में सिर्फ क्या करना है, आपके पास 2 पैकेट रखे हुए हैं. So simply you have to take only vessel and motor as used in this process. आपके ट्रेडिशनल प्रोसेस में आपने क्या किया था, एक हीटिंग मेंटल किया होगा या फिर आपने बर्नर यूज़ किया और उसमें आपने रिफ्लक्स कंडेंसर लगाया, जो कि टाइम आपका पूरा प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग हुआ. In this you have to take only vessel and motor, and you have to add these things, these 2 things which are on your sheet. See, okay, and then you have to grind it. That is, you are giving mechanical energy. अपने हाथों की एनर्जी उसमें दे रहे हैं, मैकेनो-केमिकल एनर्जी. मिलिंग प्रोसेस से करेंगे तो मिल्क वाली एनर्जी, तो जिस प्रोसेस से भी करेंगे आप वो वाली एनर्जी. आप इसमें क्या क्या किया, देखिए शेप बेस आपने बनाया, ओके. और सबसे पहला एडवांटेज क्या है, सॉल्वेंट फ्री, रिड्यूसेस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. क्योंकि मैंने आपको शुरू में चैलेंज बताया कि ये चैलेंज है. एनर्जी एफिशिएंसी, आपने लो एनर्जी यूज करी अपने कंपाउंड को बनाने के लिए. यू हैव यूज लो एनर्जी एफिशिएंसी हुआ. देन वेरी लेस स्टेप्स आर इन्वॉल्व, ओनली ग्राइंडिंग इज इन्वॉल्व, एंड विद इन 5 or 10 minutes you can get the product. Enhance safety because it eliminates the flammable solvent and reduces exposure to harmful vapors. Now you should know, because I have told you just now, that is you have to apply green chemistry principle. Any of the principle you can apply for the chemical process which you are adopting in your life. तो इस प्रोसेस को पढ़ के आपने समझा कौन कौन से आपने ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल अप्लाई करें. अभी आपने ग्रीन केमिस्ट्री का थोड़ा सा कोर्स किया है क्या, अभी पढ़ा है लास्ट सेमेस्टर? ओके. Now the first principle, that is prevention, and it is applied to this process. शुरू में ही आपने प्रिवेंट कर दिया, कैसे? By removing the solvent, okay? By removing the solvent and applying the hazardous आपको vapors नहीं मिलेंगे. Next is atom economy. And you all know how to calculate the atom economy. Okay, that is formula mass of the desired product. Desired means azomine, and then divided by formula mass of the reactants. All reactants which are involved in the reaction. मैंने कहा involved, तो underline करिए involved. जो इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन में आने के लिए, ओके, प्रोडक्ट बनाने में, ओनली दैट एंड इनटू अदर. सो इट हैज वेरी हाई एटम इकोनॉमी. देन एनर्जी एफिशिएंसी, दिस आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ, एनर्जी एफिशिएंसी में यूज हुआ. देन लेस हैजार्डस केमिकल सिंथेसिस, जो आपका 3 लॉ है कि लेस हैजार्डस केमिकल सिंथेसिस होनी चाहिए. And then design for degradation. This you know, design for degradation. आप अगर बायो प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, बायोडिग्रेडेबल आपके हो जाएंगे, and the product should be designed for degradation. Okay.
It should not harm the environment and you also. ये आपके केवल ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल्स आपके इतने ये सारे यूज हो रहे हैं इस प्रोसेस को बनाने के लिए प्रोडक्ट. नाउ यू हैव टू ऑल्सो कोरिलेट विद यूएन डेवलपमेंट गोल्स जो भी आपके गोल्स हैं. SDG 12 can be responsible कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन. ये सभी में लागू होता है कि आपने रिस्पॉन्सिबल एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको आपने प्रोड्यूस किया और कंज्यूम भी किया. इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू केमिस्ट ऑल्सो ओनली, इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल. आपने जो भी अपना प्रोडक्ट बनाया वो आपके कंज्यूम भी अच्छे से आप करें और प्रोड्यूस भी आपको सस्टेनेबल मैनर से हो. ओके. SDG 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी. ओके, ये भी इसमें आ रहा है. आपने क्लीन एनर्जी भी ली है और अफोर्डेबल है. क्यों? क्योंकि आपने तो हाथ से ही किया है सर. ओके. SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेल-बीइंग. As I have told you earlier, its application, all that applications are there. Anti-cancer, anti-flammable, anti-fungal, ये azomethine की सारी applications हैं. So it is for good health and for well-being. Also, SDG 9 क्या है? Industry, innovation and agriculture. Okay. टारगेट आपका ये भी फुलफिल हुआ. तो व्हाई आई हैव टोल्ड यू ऑल दीज थिंग्स. ये तो सिर्फ सिंपल मेथड था आपका एज़ोमीथेन बनाने का. मैं उतना भी आपको बता सकती थी कि आप अपना पैसेलर मोचर लें और उसको स्टेप वाइज करके आप मिला के बना एंड यू कैन गेट द कंपाउंड दैट इज द रियल प्रोडक्ट. Why I have told you all these things and why I have told you starting आपको बताना है इसलिए कि कोई भी प्रोसेस करने के लिए आपको जैसा कि सुबह उन लोगों ने बताया MS देखिए everything all the things 4 times आपको बार बार सोचना है क्या ये करने से मेरा इन्वायरमेंट तो नहीं इफेक्ट होगा, हमारा साथी तो नहीं इफेक्ट होगा. ओके. और वो आपको अपना एपरेटस लगाने के पहले ही आपको सोचना है. ओके. देन यू हैव टू थिंक दैट द प्रोडक्ट विच यू आर प्रिपेयरिंग इट शुड बी नॉट हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग. आप कह रहे थे ना, आपने सुबह पूछा था कि हम पहले ये सोचें कि हम प्रोडक्ट बना लें या पहले ये सोचें कि हम ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल अप्लाई करें. तो ये हम सभी आपको ये भी शिक्षा देंगे कि आप पहले सोचिए. अब क्योंकि उस सोचने में हो सकता है 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, ऐसे थोड़े से हफ्ता लग जाए, बट यू कैन कम टू द कंक्लूजन दैट हाउ वी कैन प्रिपेयर आवर प्रोडक्ट in a more simpler way and it should be helpful for the human being also. और उसके फिर सारे प्रिंसिपल आप देखिएगा क्या कुछ अप्लाई हो रहे हैं उसमें. ओके. सो देन यू कैन कोरिलेट विद यूएन गोल्स. हाँ बताइए. मैंने वो TLC तो बाद में मैंने मेंशन किया. मैंने कहा ग्राउंड वाटर फास्ट में आप जैसे बना रहे हैं, आप कैपिलरी से आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट वो ऐसे देखने से तो नहीं पता लगेगा. और अगर कलर हो एक तो ये भी हो सकता है कलर चेंज करके. हर कलर चेंज होता है ऐसा नहीं है कि आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट ही बना. यू हैव टू टेस्ट इट बाय
so many characterization procedures. तो सबसे पहले तो वही होता है PLC आपने देख लेना है कि आप अपना reactant लगा के और लगा के आप देख सकते हैं whether it is formed or not. At the end, I have to tell you that as a student of chemistry, you have a unique opportunity to drive innovation that will make a real difference, as told by Prithvi sir also and Sharma sir also. In the world, you are not just learning to mechanical processes, you are learning to transfer them or to transform them into tools. Okay. For what? For sustainability. For what? Just reshape, yes. Okay. By embracing these principles, you can help create solutions that not only meet the demands of today, but also protect the environment, as I have told you earlier, for tomorrow. So let's commit. आप हम सब मिलके ये कमिट करते हैं to protect the environment and commit to practicing sustainability in chemistry, guided by the green chemistry principles and inspired by the global vision of the UN's 17 SDG goals. Okay, so very good afternoon to everyone. Kindly pay attention because if you do not listen to the instructions that I will give, you will not be able to perform the experiment. Okay? So my name is Dr. Radhika. I am from Shamla College and a part of this team. So today we will be performing certain experiments, and the very first that we will be doing is synthesis of magnetic nanoparticles using potato extract. I just wish to know that how many students are from first year. Okay, second year and final year. So I hope by now you are much aware of what green chemistry is, what are the 12 principles and everything. Okay, so I'll straight away move to the experiment. So who all know about what nanoparticles are? Do you know what nano means? Nano means simple terms 10 raised to the power minus 9 meter. Okay. So all those particles or all those materials which fall under 1 to 100 nanometers, they are known as nanomaterials. Now, depending upon the shape, they are classified into many things, and one of them are nanoparticles. These nanoparticles can be of variety of shapes. They can be spherical, they can be rod shaped, and many more shapes they can acquire. Okay, in today's experiment, we are preparing spherical nanoparticles. Spherical nanoparticles mean that their dimensions are entirely in nanometer range, 1 to 100 nanometer range. So there are many methods of preparing these nanoparticles. That is what I said. That nano means 1 to 100 nanometer के बीच के जितने आपके particles होते हैं. Just to have a flavor for the first year students. आप देखते हैं स्केल में आप लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर का. अगर इसका भी मिलियन टाइम्स स्मॉलर आप देखेंगे, that is what actually 1 nanometer is. It is that small. For comparison, if you take earth and football, so the ratio of earth and football is similar to the ratio between football and foolery. And I hope all of you know what foolery is. C60. C60 we all know. So this ratio, okay, that ratio is basically of the nanometer range. Okay, these are some other examples that are fingernails. They grow at a speed of 1 nanometer per second. The head of a pin is about 1 million nanometer.